you want to say? Yes, Yeah. I'm very thankful for allowing the questions from the floor. So please raise your hands for any questions from the two distinguished speakers here. We now open for the questioning session. In case there are any questions for any of our guests, Yes, please. please feel free to put your question across them. Please stand up. Anyone? Just raise your hand also. Just tell your name and branch, and then you can go ahead with your question. No problem. Okay, sir. I'm Harpreet, IT third year. I want to ask something like we were talking about various diseases and various aspects and we compared with religion. So where do you actually place God in normal life? Because we compare like God can be considered this or we place God in every aspect. Like for example, I take my like myself only. I do before doing anything. Of course, I put my effort, everything. But at last step, that element of God is always present. Like I leave everything to God. So according to you, sir, where should we actually place God? Be it any religion. Where should we place God? See your comments. God is creation of knowledge. Thousands of years ago, when we stood up, those rishis and saints, earlier human beings, wanted to know, ये कैसे हो गया, कैसे मर गया, ये क्या हो गया. So, first discovery in knowledge is law of causation, cause and effect. Very basic of knowledge. Everything is cause and effect. Then they start thinking, scientists about ऋषि कि cause effect, तो मैं उसका हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, तो उसका कौन हुआ, फिर दुनिया कैसे बनी होगी. तो then in the philosophy they have what they call first cause, ultimate cause. यार कुछ तो होगा यार, अब पता नहीं था चांद कहाँ है, तो ऊपर बैठा होगा, तो भगवान है. अच्छा फिर कहाँ है? चौथे आसमान पर है, 10वें आसमान पर है, स्वर्ग में बैठे हैं. तो एक कल्पना है. It was a scientific discovery of law of causation and ultimate cause is Brahma ji है, भगवान है. That's how we made it, and it became through knowledge in our conscious cultural part of all human society. और फिर जो बड़ा हो वो अच्छा, तो राजा भी जो है उसके representative of Lord, and then they start inventing, then it becomes vested interest. कंपनी बन गई भगवान की, तो भगवान हो गया, पंडित जी हो गए, तो एक जॉब बन गया. So you have thousands of these pandits sitting in Alvar and Rishikesh, no knowledge, इनको पेशा है या क्या करें. तो science can give you new jobs. So if they become, they join VIT, they don't have sit in गंगा के माता और डूब गए होते भगवान को नहीं करना पड़ेगा. But it will take time. I agree with you. लगता है भगवान जी की इच्छा हो गई. But so I do not deny that it was a discovery of human knowledge. The scientist कि law of causation है, तो first cause कुछ होना चाहिए. How to start it? But now we know there is a dark matter. है ना? You are familiar with it? ऊपर जाके वो डार्क मैटर है. अब आप डार्कनेस क्या है तो बताओ. बिजली नहीं है तो डार्कनेस हो गया. तो डार्कनेस क्या है? इज इट अ मैटर? इज सब्सटेंस? इज एंटिटी? इज ए रियलिटी और नॉट? बट इज Absence of light. एब्सेंस ऑफ लाइट. तो यू आर नॉट गिविंग ए डेफिनेशन. आप ये तो कह सकते हो कि इसको इतना गर्म कर दोगे तो टेम्परेचर है. तो लाइट को तो आप मेजर करके बता सकते हैं, और डार्कनेस क्या है? लेकिन है. My son is a physicist, and as you know, they say color is not an entity, is not reality. Color is not a reality. अब मैं उनसे कहता हूँ बेटे कर दो रात, वो कहते हैं लाइट में ही आप कलर देख सकते हैं. तो मैंने कहा रात को अगर पेड़ है और लाइट नहीं है तो पत्ता ग्रीन है कि नहीं है? वो कहता है वो तो वेव्स हैं, एनर्जी की वो है.
So these are the questions, they are scientific issues, and you must understand, as I say, that it is a process. Alright? Thank you. Yes. Next question, please. Yes, please. गुड आफ्टरनून सर, आई एम कुसुम जोशी फ्रॉम IT थर्ड ईयर। जैसा कि सर आपने कहा हम लोग लॉजिकल जीन हैं, तो हम लोग जो भी सोचते हैं वो लॉजिकल होता है। हमने अपने कल्चर, जैसे पुराने लोग हमारे सोचते थे कि उनके टाइम से ही हम लोग बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट करते आ रहे हैं कि अदर कंट्रीज से बहुत आगे थे उस टाइम पे भी। लेकिन आज अगर हम केवल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम अपना हिस्ट्री भूलते जा रहे हैं कि हमारे देश में पहले हम लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, कितना आगे हम लोग पहुंचे थे। उस समय भी ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया था। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत होते हैं कि हम लोगों को केवल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए एंड लॉजिकल, मतलब एक फिलोसफिकल वे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को भूल जाना चाहिए, या फिर केवल टेक्नोलॉजी को ही आगे बढ़ाना चाहिए? हमने ये भी नहीं कहा कि हमें भूल जाना चाहिए। हम बहुत सुपीरियर थे। अंग्रेजों ने, मेरे पिताजी बहुत पंडित थे, संस्कृत के, संस्कृत में उधर था, माता जी बहुत विद्वान थे संस्कृत के, और इसीलिए मैं इंग्लैंड गया था, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि वेदों में सब मॉडर्न साइंस है, वो चुरा के ले गए थे, वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हुई है। अंग्रेजों ने वहां से साइंस बना करके हम पर हमला किया और हमको कॉलोनाइज कर लिया। तो जब मैं नौजवान था तो मैंने कहा यार ये तो हद हो गई, हमारी चीज चुरा कर हम पर ही लोग थोपते हुए नहीं। So at 18 I started saving money, and those days ticket was 450. Ship जहाज नहीं जाता था। And I worked in New factory to study. I went to the British Museum and I talked to the scientists. I saw them. There was no Sanskrit there. Do you know who edited and printed Vedas? Max Muller. He was a German scientist, studying young man, never came to India. An old manuscript he studied, edited, and first Vedas was printed by Oxford University in 1840. But there was, so what I said, the science of that time, yeah, remember I said to you, knowledge is with us and it gives us progress. Those rishis or scientists who put Vedas, Panini is the first linguist who coined the expressions of Sanskrit language, word and brain. Now you know, you said, negative expression, darkness is, now what is the word dark? Then darkness is a concept. So the whole area of the mind of psychology of language and culture, at that time, when we had no IT, no instruments, they created the word, concept, and whole system of Panini at that time, and the whole Vedas were preserved by Uncle Sun. Did I seek your attention? Whole Vedas, whole literature was memorized. It's called Shruti. There was no writing there. And yet, the whole very complex linguistic system developed by Panini at 600 BC or 700 BC.